Hello everybody, my name is Rishi and I welcome you to this very first episode of Pharoscion Saga, the Bootstrapped Way. इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होती है, हम बात करेंगे फेरोशन के अर्ली डेज की और मैं एक बहुत ही शानदार ब्रांड की एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा और आपसे दो सवाल पूछूंगा. We'll make this video series in a mix of Hindi and English जिससे कि लार्जर ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच सके. I'll try to be as unfiltered as I can throughout the series. So, let's begin. So, we'll begin with what is a bootstrap company. आप इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और आपने डिसाइड करा है कि आप एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लेंगे, किसी एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं मांगेंगे या वीसी फर्म से फंडिंग नहीं मांगेंगे. आपके अपने पर्सनल रिसोर्सेज, आपके अपने अभी तक के इन्वेस्टमेंट को ही आप इन्वेस्ट करके इस कंपनी की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. Now this is a very challenging process altogether, let me be very honest. Yeah, you will face maybe a lot of times crunch of funds as well. But then the benefit of it is that you'll have sole freedom on how you would like to grow this business on your shoulders or with the efforts of your own team. You can take your own time. You can make sure that the pillars of your company are really strong before you make layer by layer on top of it. Well, there are few disadvantages as well. Let's say you may feel that the type of growth you were expecting is not happening. Maybe sometimes you will face real challenges of not having enough funds for some or other activity. But then, in this process itself, with a very limited amount of resources and money, I think that you will be able to make a better venture if the work done is smart and every employee of yours is dedicated to grow your company in a bootstrap way. If I talk about early days of Pharoscion, very interesting story, and right now even I'm getting goosebumps. So I feel the same whenever I discuss this with anybody. So a few years back I got this call from Noble Park North in Australia. The call was from a gentleman and he wanted some help, technical help for his e-commerce portal. उन्होंने मुझे कॉल करा और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ. अच्छा, एक कॉल मुझे कहाँ से आया? एक मेरे दोस्त थे इंजीनियरिंग में हैदराबाद में, वो ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए और फिर वो इस पर्टिकुलर जेंटलमैन के बिजनेस में उनकी मदद कर रहे थे, काम कर रहे थे लेट्स से. और उन्होंने बताया कि हाँ मैं किसी को जानता हूँ इंडिया में, वो आपकी मदद कर सकता है. That's how I got this call. I was very excited कि a call has come and keeping in mind the type of work I was into back then, I thought this, yes, I can really be of help. I took the work, then I realized this is not my cup of tea. Like literally, the code was built in core PHP back then, and my knowledge of PHP was really, I believe it was really tiny. So then I started searching for people who can do that, and I had the other option as well that I could have just told this gentleman that ये मेरे बस की बात नहीं है. I tried my level best, but कहीं ना कहीं वो कीड़ा था कि नहीं, ऐसे नहीं गिव अप करना है. 100% मैं एक एफर्ट तो लूँगा. मैंने खुद भी थोड़ा सीखा और मीनवाइल मुझे आई गॉट द फर्स्ट फेरोशन ऑन बोर्ड, जिन्होंने मेरी मदद करी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. फिर हमने डिलीवर करा. द जेंटलमैन बैक देयर इन ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी हैप्पी एंड देन ही सेड that Rishi, if you can help us on a regular basis, because I really want some tech support. And I was like, yeah, well, there is no harm in supporting somebody. Then he said that, okay, well, Rishi, I believe that you can do it for free. And I said, well, I can, but I've read somewhere that if you're good at something, never do it for free. We both laughed, and he agreed upon certain charges, and that's how the story started. Now, if I look back, since we started and where we are right now, tremendous growth. Yeah, and not only tremendous growth, a lot of challenges. A lot of times, if I have to be as transparent as possible, let's say with you all. So a lot of times, in a bootstrap venture, you feel like, am I really doing good by not taking external funding?
You sometimes get second thoughts as well. But I think that's exactly where, you just have to have a bit of peace of mind, have a balance and make sure that you don't give up. If you'll not give up, sooner or later, success gonna come. At least that's how, I have experienced or I've realized. Now, Pharoscion is a group of close to 25 people. People are working from across the country. Well, that's about the first story of how Pharoscion really started. In the second episode, we'll talk about other details of Pharoscion as well, growth kaise hui, etc. But then, who is Mr. Sanjeev Juneja? Or have you heard of Divisa Store? Well, I don't know आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, बट अगर मैं कहूं कि आपने डॉक्टर ऑर्थो ब्रांड का नाम सुना है, या आपने सच्ची सहेली प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, या यंगस्टर्स में बहुत फेमस है एक्यूमास फॉर वेट गेन एंड ऑल, सुना है राइट? इनके फाउंडर हैं मिस्टर संजीव जुनेजा। और मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनका ही मेन मेजर ब्रांड है दिविसा स्टोर, जिसके अंडर में ये कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। और भी प्रोडक्ट्स हैं बट ये 3 बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा। एंड वन मोर, राजू श्रीवास्तव ने ऐड करा हुआ है पेट सफा, राइट? सो आपको जान के हैरानी होगी, दिविसा स्टोर इज अ बूटस्ट्रैप कंपनी, स्टार्टेड फ्रॉम हिज ओन मनी एंड लुक वेयर इज राइट नाउ। आई वाज वाचिंग वन ऑफ हिज वीडियोस जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने अपनी माता जी से 2000 रुपए लिए और अपने काम की शुरुआत करी। वेल, आई एम क्वाइट श्योर द मदर्स हेल्प एट दैट टाइम वाज रियली रिक्वायर्ड एंड लुक व्हाट ही हैज बिल्ट फ्रॉम इट। इस तरह के ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे फाउंडर्स, बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं जिनकी स्टोरीज हमें मालूम ही नहीं है। इतना ज्यादा एफर्ट्स वो करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी राइट टाइम व्हेन वी एटलीस्ट should start recognizing these people. And if not, then at least not poke them, bully them if failure मिलता है उनको बिजनेस में। Because trust me, कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को आगे बढ़ाना आज कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो ये कर रहे हैं, hats off to them. Well, that is all from my side in this first episode. I really tried my level best to be as transparent and as unfiltered in this one, and I'll make sure that I come up with some another story in the next episode. Till then, take care of yourself, be motivated, and if you have any questions, feel free to connect with me over LinkedIn, or you can get in touch with me on Facebook and Insta as well. Have a lovely day. Bye bye.